435 पेज। अब इसमें थोड़ा सा चेंज है, फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ। अब आपको हमें एक वेक्टर ऐसा ढूंढना है जो इसकी डायरेक्शन में हो। तो सबसे पहले एक बात ध्यान में रखिए कि वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द पेरेंट वेक्टर विल ऑलवेज बी ए यूनिट वेक्टर। जब हम इसी वेक्टर का एक यूनिट वेक्टर लेंगे, उसकी डायरेक्शन हमेशा सेम होगी जो इसकी वेक्टर है, एंड दैट हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ 7 यूनिट। दो चीजें फाइंड आउट करनी है। एक, इसकी डायरेक्शन में वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए, वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए। सेकंड, its magnitude should be 7. दो चीजें आपको ध्यान में रखना। तो सबसे पहले इसका यूनिट वेक्टर ढूंढो सो दैट वी कैन गेट द सेम डायरेक्शन। सो दिस इज I माइनस j अपॉन component of I, this is 1, component of j, this is minus 2 under root. So which is I minus 2j upon 1 plus 4, that is under root 5. So 1 over under root 5i minus 2 upon under root 5j. Up. I want to get the magnitude 7 also. So multiply it with 7 to get the magnitude. So this is 7 by under root 5i minus 14 over under root 5j. So that means this is the vector which is in the direction of vector A and has the magnitude 7. So is the vector in the direction of in the direction of vector A and has magnitude 7. So, any doubt in this? Priya has not joined. Prachi has not joined. Abhishek has not joined, but they have. Bhavya has come. Okay, might be they are getting their breakfast. मनकिरण, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया? How to get the required magnitude and the vector in the same direction as that of the unit vector. Fine. Now, example 8. This is the part of paper so many times. This example important. Example 8, 435. He's saying find the unit vector. अब देखिए, पहली बात तो आपको यूनिट वेक्टर ढूंढना है। एक तो यूनिट वेक्टर ढूंढना है, दूसरा इन द डायरेक्शन ऑफ सम ऑफ द वेक्टर्स, उसकी डायरेक्शन सेम हो जो दो वेक्टर्स दे रखे हैं इसके सम के, इन द डायरेक्शन ऑफ सम ऑफ वेक्टर्स। अब देखिए वेक्टर क्या दे रखा है आपको। वेक्टर इज गिवन ए, दिस वेक्टर इज गिवन, दिस इज 2i प्लस 2j माइनस 5k। अब एक और वेक्टर दे रखा है b, 2i प्लस j प्लस 3k। अब दो चीजें, एक तो मेरे को वेक्टर यूनिट वेक्टर ढूंढना है। यूनिट वेक्टर किसका ढूंढना है? इन दोनों वेक्टर्स के सम का। आई फील क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। तो इन दोनों का सम मैं उसको ले लेता हूं x,
एक्स किसके बराबर हो गया, ए प्लस बी। तो इसमें दो कॉन्सेप्ट लगे, एक तो यूनिट वेक्टर का, एक एडिशन का। अब ए प्लस बी को ढूंढना है, तो आई कंपोनेंट में आई कंपोनेंट ऐड करूं, 2 + 2 4, सो दिस इज 4i। 2 + 1, दिस इज 3j -2k। अब इस सम आ गया, उसको मैंने x लिया, तो इसका यूनिट वेक्टर x डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, सो दिस इज 4i 3j -2k ओवर 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर -2 स्क्वायर अंडर रूट, which is equal to 4i plus 3j minus 2k upon 16 plus 9 plus 4। तो 16 और 4 20 और 9 29, so that means 4/29 under root I plus 3/29j minus 2/29k is the required vector. Clear? So this is the unit vector in the direction of the sum। आपको एंड में लिखना है, बिकॉज उसने ये पूछा है, is the unit vector in the direction of sum of the vectors sum of vectors a and b। I hope this is clear। जब आप, is it fine? Yes, sir. Because your response is very important for me। If you will not respond, I will not come to know whether the things are clear to you। Harman, are you there? Yes, sir. Okay। तो एक बार मैं क्विक रिवीजन करूं, अभी तक मैंने किया क्या। देखिए, अभी तक हमने क्या क्या किया। हमने वेक्टर्स की डेफिनेशन की, हमने ये देखा कि एडिशन ऑफ वेक्टर कैसे करते हैं। आई कंपोनेंट इज ऑलवेज एडेड इन आई, जे कंपोनेंट इज ऑलवेज एडेड इन जे, के कंपोनेंट इज ऑलवेज एडेड इन के। सेम इज विद सब्ट्रैक्शन। फिर हमने ये किया कि एक यूनिट वेक्टर को कैसे ढूंढते हैं। फिर हमने ये किया कि एक यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन, पेरेंट डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर विद पेरेंट वेक्टर। फिर हमने किया कोलिनियर वेक्टर और पैरेलल वेक्टर। फिर हमने किया इक्वल वेक्टर, कि टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल ओनली if they have the same components। That means their x components must be equal to x and j component must be equal to j and k component must be equal to k। Fine। तो इतना नोट करके then we will move to the example 9। I'm giving you a minute to note। अब नया कॉन्सेप्ट आ गया, डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइन, दिस इज द न्यू कॉन्सेप्ट, 7th कॉन्सेप्ट। 6 तक तो हमने कर लिए, 6 तक वी हैव फिनिश्ड। राइट।
Just hold, please. चलिए, come to the next concept, डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइन। अब देखिए, पहला डायरेक्शन रेशियो। Suppose we have the vector 2i, 3j, 4k. So any term which is attached with I, j and k, I, j and k, any term which is attached with I, j and k, that is 2, 3, 4. This is called direction ratio. Any term which is attached with this is called direction ratio. I के साथ 2 लगा हुआ, 3 के साथ, j के साथ 3, k के साथ 4. So 2, 3 and 4 is called direction ratio. Fine. So component of I, component of j, component of k are called direction ratios. Next is direction cosine. Now, direction cosine means cosine of the angle. Means, अब देखिए, if you have a plane with you, suppose this I component is this j component, this k component. Suppose it is associated with an angle alpha, it is associated with an angle beta, it is associated with an angle gamma. So cos alpha, cos beta, cos gamma, that means cos of the angle alpha, cos of the angle beta, cos of the angle gamma are called direction cosine. So how you will get direction cosine for I component? Cos alpha, ये किसके बराबर हुआ? This is 2 upon I component square, j component square, k component square, under root. So which is equal to 2 upon 4 plus 9 plus 16. This is equal to 2 over under root 29. This is cos alpha. That means direction cosine of the angle alpha. Now, if you want to get cos beta, direction cosine of angle beta, so that means consider j. So this is 3 divided by
The sum of the magnitude of the all components, this is under root 29. So this is cos alpha. So square of the sum of the square of the direction cosine will always be 1. Cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is always equal to 1. That means 2 upon under root 29 square, which is 3 upon under root 29 square, 4 upon under root 29 square. So this is 4 upon 29, 9 upon 29, 16 upon 29, which is equal to, so which implies sum of square of direction cosine always 1. Is always equal to 1. Fine. Voice is cracking, so I will switch off my video. Maybe उससे कुछ फर्क पड़ जाएगा. So concept of direction ratio and cosine, this is very important because the same concept will be used in three-dimensional geometry also in the next unit also. तो मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूं. Direction ratios क्या है? Any component which is attached with I, J and K, this is called a direction ratio. And how you will get the direction cosine? There are three direction cosines. One is cos alpha. That means cosine associated with I. J, cosine associated with J. K, cosine associated with gamma. J is a cosine associated with beta. K is a cosine associated with gamma. So cos alpha is equal to I की direction ratio क्या है? 2. 2 को मैंने सारे direction ratios के sum of squares के से divide कर दिए. So that means 2 square, 3 square, 4 square. This is under root 29. In the same way, cos beta is equal to 3 over under root 29. Cos gamma, this is 4 over under root 29. Clear? Now, the concept is sum of the square of the direction cosine will always equal to 1. So, cos alpha, that is 2 over under root 29 square. Cos beta, 3 over under root 29 square. Cos gamma, 4 over under root 29 square. Clear? So, this is always is equal to 1. These two are very important concepts of this. Any doubt to any student in this, please, you're free to ask. Now, how you will calculate a vector which joins 2 points? This is another concept.
बेटा जब ग्राफ इज नॉट द पार्ट ऑफ द कोर्स, सिर्फ कैलकुलेशंस ही हैं। अब देखिए वेक्टर ज्वाइनिंग 2 points. Suppose A is a vector which has a component 2i plus 3j. B is a component, suppose this is 3i plus 4j. You want to find out AB. So AB is equal to OB minus OA, where O is the origin. That means vector with reference to A and B. This is the same vector with reference to A and B. So my OB, this is 3i plus 4j minus OA, this is 2i plus 3j. So which is equal to 3i minus 2j plus this is 3i minus 2i plus 4j minus 3j. This is I plus j. So AB is equal to I plus j. This is the vector, clear? Joining A and B. So AB is a vector which joins A and B. Always, if you want to find out AB, you have to start from B. OB minus OA. पहले last वाला, फिर minus पहले वाला. Clear? If you want to write, suppose the vector CD, this is OD minus OC. That means first D will come, then C will come. Fine. This will be the criteria when you have to find out the vector joining the 2 points. For example, in example number 10, नਵੇਂ खंबे लगने हैं वो उधर लगन लगे सी राणा दा रामपुरा के अंदर तो इधर ना खंबे साढ़े